Start how recording? Yes. Okay. So let's start with the goods receipt. So basically, as we have the condition types in pricing procedure, same we have movement types as well. There are 6 to 7 movement types which are used in most of the movement types are used in industries, which are top used like 101 hai, 356 hai. So I will let you know all those things. Okay. So I'll start with the goods receipt. What exactly goods receipt is? So first of all, the goods receipt is a phase where material is received by the ordering party. Material is received by the ordering party, and the condition types in condition and quantity are verified. We do verified, and which depends on the movement types. So this is a GR, which is called a goods receipt. GR is a phase where materials is received. हमें materials मिल जाता है. So by the ordering party. So what we have to do is that we have to just verify it. Okay. So now the second point is goods issue. Goods issue means moving a stock out of our inventory that may be for any reason. कुछ भी reason हो सकता है, just for your testing or to return it. So means moving a stock out of inventory that may be due to any reason, like withdrawing a material or for just to checking a sample or returning the goods to the vendor. बेसिकली क्या हो रहा है, गुड्स रिसिप्ट which results in decrease in our quantity in warehouse. गुड्स इशू, क्योंकि इशू हो रहा है वहाँ पे. ठीक है. So we will see goods receipt, goods issue as well. And movement types I will let you know what it is. So one more point I have added here is that release strategy. किसको पता है what it is release strategy? सर कैन यू रिपीट, आपने क्या बोला सर? Release strategy. सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर. ओहो. अभी ओके है? हाँ ठीक है सर, अभी तो ठीक है. हाँ. Release strategy पता है, like what it is, what release strategy is? Okay, let me explain you first what exactly it is. I'll start with the goods receipt first. The T code for that is MIGO. Let me type the code MIGO. It's MIGO. Okay, so what is the first point? Our first point is goods receipt. I'll just select here goods receipt. Goods receipt है, यहाँ पे आ गया others. So select over here purchase order because I have purchase order. जो मुझे purchase order जो मेरा है, the code I have the purchase order, on that basis I will just do the goods receipt. So I just select purchase order. यहाँ पे आ गया अपना goods receipt. This is purchase order. Or I'll just add the purchase order, and this is the movement type. Like as you can see over here, 101. Movement type is of 3 digits. This is the movement type. So I will select the purchase order which I have created. So I have the purchase order over here, or you can just view it by ME2L. मैं यहाँ अपने ऑलरेडी मैंने परचेस ऑर्डर क्रिएट किया था. जस्ट सेलेक्ट दैट परचेस ऑर्डर. ओके, लेट मी सेलेक्ट द परचेस ऑर्डर. गाइस आवाज़ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो रेज योर वॉइस, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है. So this is my purchase order. Control Shift Y. I'll just select this one. कॉपी. ये मेरा परचेस ऑर्डर है, मैंने परचेस ऑर्डर यहाँ पे दे दिया. एंड आई विल सिलेक्ट माई प्लांट. ठीक है, मैंने इतना डेटा फिल किया है. आई विल जस्ट प्रेस एंटर. व्हेन आई प्रेस एंटर, ऑटोमेटिकली वो डिटेल आ जाएगा यहाँ पे जिस पे मैंने परचेस ऑर्डर दिया था. ठीक है. सो हियर इज द क्वांटिटी, वी हैव द स्टोर लोकेशन, वी हैव द यूनिट, we have the stock type. What are the types of stock? We have 3 different types of stock, which is quality,
one which is blocked, one it is unrestricted. क्वालिटी, क्वांटिटी एंड वैल्यू। नहीं, यहाँ पे जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, ब्लॉक्ड एक है और क्वालिटी एक है। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज दिस? प्रसाद और शुभम, एनीवन? सर सर कौन सा? जो स्टॉक टाइप हमने बताया, तीन अलग अलग हम्म, स्टॉक टाइप्स है, सो व्हाट आर दे? यहाँ पे दिखाया मैंने, क्वालिटी, ब्लॉक्ड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? When material comes in our store premises, that time we have to inspect that material like a Yes. quality inspection. Right. So we uh, like the quality inspection. Hmm. That's the use of quality inspection. And Right. block stock is the block stock idea. ओके, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड? ओके, सो बेसिकली सर ब्लॉक्ड वो हो सकता है या तो जो जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। नहीं, देर आर सेवरल रीजंस फॉर विच वी डू ब्लॉक इट, सो डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो क्या रीजन है, क्यों हम ब्लॉक कर रहे हैं, तो दे हैव टू मेंशन द रीजन दैट फॉर दैट एज वेल, सो एट दैट टाइम यू कैन सिलेक्ट ब्लॉक। अनरिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस विच वी आर गोइंग टू यूज इट, यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड, तो हमेशा के लिए ये अनरिस्ट्रिक्टेड ही होता है, इट्स बाय डिफॉल्ट ओवर देयर। सो दिस इज माई प्लांट, आई हैव एंटर्ड माई परचेस ऑर्डर, आई हैव जस्ट प्रेस एंटर, तो फिर यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल आ गया। So at last you have to click on item OK. So before that I will check is every detail over there. Yes, यहाँ पे मटेरियल आ गया मेरा, यहाँ पे मेरा क्वांटिटी है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वेयर इट इज़, ये मेरा प्लांट कोड है, स्टोर लोकेशन, इसमें ये पूरा मटेरियल रहना चाहिए, परचेस ऑर्डर, यहाँ पे आ गया अपना परचेस ऑर्डर, एंड एट लास्ट बिफोर पोस्टिंग यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन आइटम ओके। वाई वी डू इज इट? हाँ, अभी ये आइटम ओके है, नाउ वी कैन जस्ट गो अहेड एंड पोस्ट इट। जब तक आइटम ओके नहीं करोगे यू कैन नॉट पोस्ट इट, सो बिफोर पोस्टिंग यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन आइटम ओके एंड चेक व्हाट आर द एरर्स, मतलब कुछ इश्यूज है क्या। सो नाउ ऑनवर्ड्स वी विल फेस कपल ऑफ इश्यूज जहाँ पे हमें फिर से कुछ चीज़ें फिर से बार बार करनी पड़ेगी। आई विल जस्ट चेक। ओके, प्राइस चेंज, ये एक वार्निंग मैसेज है, price change for Samsung. Okay, no issues. This is a warning message. I can just click over here and I'll just click on post. Check हो गया, I will just click on post. Post यहाँ पे आपको दिखाई देगा मटेरियल, यहाँ पे दिखाएगा आपको मटेरियल डॉक्यूमेंट, सो उनसे इस पोस्टेड यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट का यहाँ पे पोस्ट होगा, यू कैन रिसीव द मैसेज। आई विल जस्ट नोट डाउन दिस मैसेज। ओके, वी नीड टू नोट डाउन दिस। आई जस्ट नोट डाउन हियर। Your voice is not. हेलो, Yes, sir. ओके, सो नाउ आई विल गो फॉर goods issue. अभी हमने goods issue देखा, now we'll go for goods issue. For goods issue we have to just select the second option over here, goods issue है, so select other, यहाँ पे other है अपनी, और just purchase order, purchase order, we have the code for that, press enter. Okay, let me check this website. आवाज़ आ रही है ना क्लियर आपको? अगर नहीं है तो बता दो, आई विल जस्ट चेंज माई पोजिशन। आ रही है सर। आ रही है, ओके, MIGO, वन सेकेंड, गुड्स इशू, गुड्स रिसिप्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट इज गुड्स रिसिप्ट, नाउ से गुड्स इशू।
I just select my purchase order. One second. Does not contain item in stock. Okay. Go back. Let me check. Okay. Meanwhile, I will show you about the release strategy. How we perform the release strategy. उसका क्या सीन है? किसी ने वर्क किया रिलीज स्ट्रैटेजी पे कभी? सर रिले मतलब स्पेलिंग क्या है सर रिले की? रिलीज स्ट्रैटेजी नहीं सर, नहीं, वर्किंग नहीं किया उसके ऊपर. ओके नो इश्यूज. सर एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट करने के टाइम का होता है क्या? मैं बताऊंगा आपको, एक सेकेंड. ME29N. Okay, so now let me cancel this thing. अभी मैंने जो अभी पोस्ट किया है अमीगो का, तो आपको शायद से ये एरर आएगा. जब मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट जो किया है वहाँ पे जब हम पोस्ट करते हैं ना, चेक या फिर पोस्ट करते हैं, देयर यू विल रिसीव मैसेज रिलीज स्ट्रैटेजी हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड, ये वाला जो है. So at that time, what you have to do is that you have to go to the T code ME29N. When you go to the T code ME29N, यहाँ पे you have to enter your purchase order, the one which you have created, and the vendor ID which you have already given the purchase order to that vendor. And then what you have to do is that here you have to select two check boxes. The one which is called as general manager को release करना है. Why do it? I will explain you. Second one is manager को release करना है. Basically क्या होता है? These are the criteria which is defined in the organization. There are some certain amounts that has to be get approved by the आवाज management. नहीं आ रहा सर. आवाज नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा? Is it okay now? हेलो हेलो Hello. Hello. हेलो. हाँ, मुझे आवाज आ रहा है आपका प्रसाद. I can hear you. Hello. नो सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. Okay, okay. Give me 2 minutes, guys. Just मुझे 2 मिनट देना. योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर. सॉरी. हेलो. हेलो. यस सर. अभी आ रही है आवाज? हेलो. हाँ, हेलो हेलो हेलो. यस सर. Now it's okay. यस सर. Okay, finally let's start now. लेट मी शो यू कि आपको एरर कहाँ पे आएगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको थोड़ा सा इशू आएगा वहाँ पे मीगो के समय पे. लेट मी शो यू. मीगो press enter. When you create your goods receipt, the first point when you create it, so when you go to the Migo, MIGO, हाँ, यहाँ पे आप अपना परचेस ऑर्डर नंबर डालोगे. यहाँ पे 45 से जो स्टार्ट होता है. आफ्टर दैट व्हेन यू ऐड द डिटेल्स ओवर हियर प्लांट, once you add the details, press enter. यहाँ पे पूरा आपका डिटेल आएगा. Then you have to check the checkbox. Check this करने के बाद when you click on check or post, at that time you get an error like release strategy has not been performed. So तब आपको क्या करना है? At that time you have to come to the T code which is called as ME29N. वहाँ पे आप आके आपको क्या करना है? You have to just release this. Let me click one second. So यहाँ पे लिखा है release. यहाँ पे लिखा है release.
and then you have to save it. ये हम क्यों करते हैं? Why? Because कंपनी में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, फॉर अ सर्टेन अमाउंट यू हैव टू गेट द अप्रूवल्स. सो फर्स्ट वन इज जनरल मैनेजर. what he does is that he will check all the details and he approves it, means वो रिलीज कर देगा अपने एंड से. सेकेंड वन इज मैनेजर. these two are different positions, दो अलग अलग positions है, दो अलग अलग persons है who are going to approve this, who are going to release this. So once it is released, it will go to the manager, then he will release it. Even he can cancel as well, they can cancel as well. So once it is done, you can save it. Once it is saved, फिर जाके आप जब चेक और पोस्ट करोगे, then that error will be resolved. Then you can just post the particular detail like goods receipt, तब आप कर सकते हो. Let me show you. I have another purchase order over here. अभी तो से create किया मैंने. आवाज आ रही है ना? अभी क्लियर है ना? Yes, sir. एक्चुअली मैंने इतने दिन खड़े होकर लेक्चर लिया था, तो मैंने सोचा कि आज बैठ के लेक्चर लेता हूँ, तो जिस बैठा तो फिर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फाइनली फिर से आज खड़ा ही हो गया. ओके, डू वांट टू सेव इमेजेस? यस, यस, सेव इट. द वन विच आई ऑलरेडी मेड उसके लिए है. ओके, यहाँ पे है. ओके, इसका ऑलरेडी हो चुका है, सो इट इज़ नॉट शोइंग. किसी का परचेस ऑर्डर क्रिएटेड है. आई विल शो यू एग्जांपल, लाइव एग्जांपल. किसी का परचेस ऑर्डर क्रिएटेड है? एनीवन? कोई भी परचेस ऑर्डर नंबर दे दो. You can search it. Meanwhile, I will start with goods issue, जो अपना second point है. Goods issue other. I'll just click on other, press enter. Once I press enter, what I have to do is that I have to select the material at the bottom of the page. You have to click on open detail data. ऐसा हो काफ़ी समय पे ऐसा होता है. So just click on detail data. Enter your material. You have to add your quantity. Once you add your quantity, just select where, कौन से plant में जाना चाहिए. Just select the plant. Select your storage location. Press enter. Once you press enter, item okay is there. Material आ गया यहाँ पे. Just check it. What is over here? Enter cost center. Okay. यहाँ पे जाओ. Cost center is MINCC. Just check once again. Nothing is there. Document is okay. Now you can just post it. As you can see, goods issue हो गया. पहले हमने goods receive किया, अभी goods issue has been done. This is the document number. So ये दो point clear आ गया. Goods issue और goods issue और goods receipt. Is it clear? Is it clear? चिन्मय, नेहा, पीयूष, प्रसाद, शुभम. यस सर, यस. ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. आई नो इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. मैं यहाँ पे सिनेरियो लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके वो इश्यूज आपको भी आएगा. सो एनीवन कैन प्रोवाइड मी your PO number. I can just explain you on that ki what are the issues you are going to face. So one which I have already shared is that you will receive the release strategy. वही error आएगा that you have to resolve it by using ME29 code, ME29N, that you have to release it. Okay, back. यहाँ तक क्लियर या फिर कुछ डाउट्स गाइस? तो यहाँ तक क्लियर है. क्लियर है. नेहा, पीयूष? सर मुझे तो वीडियो देखना पड़ेगा एक बार वापस, मुझे थोड़ा कम समझ आया है. ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ. नहीं वो सर मैं एक बार देखूंगा तो आ जाएगा मुझे. नहीं, हाँ वो आप देख लेना. बट इन केस अगर एट दिस पॉइंट इफ यू वांट लाइक इफ यू वांट एक्सप्लेन मी वंस अगेन, आई विल एक्सप्लेन यू. बट अपना पॉइंट क्लियर करके लेना. जस्ट क्लियर योर कंसेप्ट्स. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. वो क्लियर कर.
बिकॉज ऐसा ना कि वीडियो देखे भी अगर कुछ वहाँ पे कुछ इश्यूज आ गए देन वी हैव टू catch it 1 second. If you want, I can explain it 1 second. I'll perform it 1 second for you guys. So do it once again. Yeah, okay. So एक्चुअली मुझे यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आ गया क्योंकि मैंने सब सॉल्व किया है. सो आई विल एक्सप्लेन यू वेर एवर आई एम फेसिंग एरर. if you have any purchase order number you can provide me. I will perform on that. Okay, as of now we'll do it on mine purchase order. So उसके लिए मैं एक काम करता हूँ. I will create another purchase order for a meanwhile. I have one purchase order with me. Yes. Shall we do at that? Yeah, you can just send me, or you can just tell it what exactly it is. I have a number of a purchase order. हाँ. 140113. 140113. 450014 ना, right? 4500. I guess. पुढे काय? 140113. बहुतेक मी आधीचं काही लिहिलेलं नाहीये त्याच्यात. रेंज काय आहे चेक करायला लागेल मला. Okay, no issues. Let me know your plant code. Yeah. Plant code. It's KRR1. 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 Okay. Purchase order. Purchase order starts with 4-5 mostly. Mostly means 99.99. It starts with 4-5. So what happens is that issue क्या होता है when you create a purchase order. Let me show you the screens. Okay. So as you can see, this is a purchase order which I've created, which start by 4-5 because I've selected my document type is NB. When I'm selecting your purchase order, it's showing as AN. AN. KRR. Let me check. AN. So here it's NB. So basically, where is the mistake? Let me show you. गलती कहाँ पे हो रही है? Let me show you. /n ME21N. Okay. So यहाँ पे क्या होता है? Here you have to select यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है PO स्टैंडर्ड SAP. यहाँ पे कोई दूसरा वाला भी आता है ऑप्शन, so which will create another purchase order. So it's always better, which is not wrong, but still it's always better if you create PO standard SAP over here. So now what I will do is that I will just do one more purchase order. Let me select the vendor. Okay, I'll select the vendor. I will select this one, 383. I'm just adding details. I'll take over here 40. Currency INR. Okay, so just save it. After add the price, okay, save. I'll just save it because I need purchase order number. Okay, this is my purchase order number, which is 424960 450024960. So now I'll create. I will go to Migo /n MIGO for goods receipt. Goods receipt purchase order. I have the purchase order which I've created just now. We have the plant. I will just press enter. Once I press enter, material यहाँ पे आ गया, जो हमने अभी just पूरा डेटा डाला था यहाँ पे आ गया, unrestricted आ गया. This is the movement type.
which is for only and only for goods receipt. Goods issue के लिए अलग सा movement type होता है. Okay, यहाँ पे अगर I have to just click on item OK and I will check it. Issues, what are the issues? कहीं पे कुछ है क्या? No. I will just click on post. Once I click on push, ये हो गया मेरा posting. Goods receipt का ये मैंने post कर दिया. This has been posted. यहाँ तक clear guys? यस सर. या फिर मैंने बहुत स्पीड बताया? नहीं नहीं. नहीं नहीं, ये सर सही बताया सर. ओके, सो ये होता है इसका एक जीआर, इसका जीआर का यहाँ पे जीआर गुड्स रिसिप्ट जीआरआई बोल सकते हो. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जीआरआई बोलते हैं इसको, गुड्स रिसिप्ट इनवॉइस, या फिर आप जीआर बोल दो. सो दिस इज अ मूवमेंट टाइप फॉर जीआर. फिर गुड्स इशू के लिए अलग सा मूवमेंट टाइप है. सो जस्ट यू हैव टू ऐड द परचेस ऑर्डर. सो नेहा आपको पता चल गया व्हाट वी हैव टू सेलेक्ट एट द हाँ क्रिएशन. सर. हाँ सर. It should be Yeah. 40, it should be starting with 4 or 5. या. Okay. So release strategy वो भी एक बार मैं आपको बता दूंगा. release strategy /n me29n. Let me select the purchase order which I have created just now, and then let me take. उस खंडे पे ऑलरेडी किया है मैंने, इसलिए नहीं करा. conditions in here. परचेस ऑर्डर, टू सिलेक्ट द परचेस ऑर्डर. जिस परचेस, जो परचेस ऑर्डर पे आपको गुड्स रिसिप्ट डालना है, so you have to select that, because on that we are going to do the release strategy. TVS2, TVS3. TVS3. यहाँ पे आएगा रिलीज स्ट्रैटेजी. सो हाउ टू रिलीज इट. सो यहाँ पे अभी तक रिलीज नहीं किया है, यहाँ पे ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, सो जस्ट कैंसिल इट. So basically you have two different people, general manager and manager. So there are some amount, there is a specific amount. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है कि दिस मेनी वैल्यूज which is allowed for the particular approval. So general manager will approve it, he will release it from his end. So once it get released, so it comes to the manager. There are two different people, so we have to release this as well. So once it is, so यहाँ पे नाम दिया release PO, release purchase order. So which is almost which is near management. So they will approve it in the system, because it's a huge amount. If when it's a huge amount, we have to get approved from the leads. So once it is approved or once it is released, then only we can go ahead and process the goods receipt and goods issue. We can perform it. So now it is done. I'll just save the data for it. So, release strategy clear. Yes sir. So I will start with goods issue. So we have less than 1 minute. Can you connect in the next session within 5 minutes? Sure. Sir.
ठीक है, आई जस्ट नीड 5 to 7 minutes ऑफ ब्रेक, मैं ब्रेक लेके आता हूँ, सो यू कैन कनेक्ट अराउंड 5:15, 5:16, 8:16. Okay, I'm closing the call.